everyone, I am Monica and welcome to Expronica. First of all, I am so grateful to you for giving such a lovely response on my videos. In the previous video, I told you how and why I turned towards a light-hearted and a low-stimulating entertainment. In today's world, situation of food and entertainment is same. There are so many food options, but not every option is healthy for us. You know, for a junk food, there is a term empty calories because it just adds up to the calorie but it doesn't provide any nutrition to our body. Same way in the entertainment also, there are some piece of a content which are just empty entertainment. They does not provide any nutrition or any value in our life. Today I want to tell you about a show which is definitely going to add value in your life, and that is Sarabhai vs Sarabhai. I know many of you have already watched this show, but if you haven't watched, please watch it. It is available in YouTube and Disney Plus Hotstar, and it is free of cost. You don't require a subscription for it. It is a comedy show. It was aired in 2005, like 20 years back, but it is still relevant. It is such a great show. It's such a brilliant comedy show. Like no other, I haven't seen any show like this. The plus point of this show is it has a great star cast. Main characters are played by Ratna Pathak Shah, Satish Shah, Sumit Raghavan, Rupali Ganguly, Rajesh Kumar. And you know who have given the guest appearances in the show? Mallika Sherawat, Mandira Bedi, Makrand Deshpande, Sunil Tawde, and Dipali Sayyed, then Kshiti Jog. You know, I have seen their work in this era, but it is such a fun to watch them in 20 years back, how they were 20 years back. It's really fun. मैंने ये शो पहली बार मेरे इंजीनियरिंग डेज में देखा था. इस शो के सारे एपिसोड्स मेरे लैपटॉप में थे एंड आई यूज्ड टू वॉच इट अगेन एंड अगेन. तब मुझे मोनिशा ज़्यादा रिलेवेंट लगती थी, या फिर मैं ज़्यादा एम्पथाइज करती थी विथ मोनिशा, एंड माया वॉज माई लाइक अ विलन फॉर मी. But now when I watch this show, for me, I relate more with Maya, and Monisha really irritates me. And this change in my perspective about this show kind of, sparks so many thoughts and conversation in my head already. And you will understand why when you watch this show. I told you that this show is 20 years old, and till today it is relevant. Why? It was so ahead of its time. This show, through their situational comedies, it's full-on comedy show, but this show touches upon concepts like regular health checkup. This Sarabhai family do their regular health checkup, and they count their cholesterol and calcium, and they diet and exercise according to it, which is not normal even after 20 years. This is not normal in middle class. Though this family is upper class family, but after 20 years, some kind of standard of living or a thought level should percolate downwards in the societal strata. I think that way. This show touches upon a subject of intimacy between husband and wife. That intimacy sometimes can get fade away, and at that time that couple should consult a doctor or a counselor, and this is the topic of one of the skit. And at that time Maya consult with a counselor for her son and daughter-in-law. Is this normal in today's life in middle class? No. In one of the episodes, there is a character called Maya. She says that she don't drink a filtered water, she drinks only aqua mineral water, and how the filter water is not good for our kidneys. After 20 years, अब जाके हमारे मिडिल क्लास समाज में ये कॉन्सेप्ट पहुंचा है कि फिल्टर वाटर इज़ नॉट गुड, एंड अब जाके वो फिल्टर में कुछ कंपोनेंट एक मिलता है, उसकी वजह से वो मिनरल्स रिस्टोर होते हैं आफ्टर 20 ईयर्स. कुछ दिनों पहले बेंगलोर के एक इंजीनियर ने सुसाइड किया बिकॉज ऑफ हिज डिवोर्स केस, एंड इसने एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया कि अबाउट डिवोर्स, लॉज, एलिमनी, डाउरी एट्सेट्रा, राइट. 20 years पहले इस शो में एक एपिसोड है अबाउट डिवोर्स, एंड दिस एपिसोड टॉक्स अबाउट द सेम थिंग्स 20 years back, and in such a brilliant way they have shown the both sides or the various angle of this issue, and in a comic way. Literally, what a brilliant writing. In this show you will see amazing and very mature relationship between dad and his sons.
they can talk to each other about their love interest, about their, some issues like which are very hard to talk today also. 20 years back, this show mentions veganism, homosexuality, sexual orientation. Father asks his son about his sexual orientation. Is it interested in same sex or opposite sex? Throughout this show, you will see that this family plays Scrabble. So Scrabble is a game. I haven't played this game, and I don't know anyone who play this game. So even after 20 years, a thing which is very common in upper class is not percolated down to the middle class. So what kind of progress we are doing? मेरा एक favorite scene भी है, वो भी मैं I would like to tell you about this. वैसे देखा जाए तो माया और मोनिशा लग सकते हैं कि दे आर वेरी अपोजिट टू ईच अदर, एंड हमें ऐसा लग भी सकता है कि माया हेट्स मोनिशा. बट एक सीन है जिसमें क्या होता है कि मोनिशा और साहिल का झगड़ा होता है, और उस झगड़े में साहिल को उसके डैड ने जो घड़ी दी हुई है वो टूट जाती है. तो साहिल अपने माँ बाप से उस झगड़े के बारे में बात कर रहा है, एंड वो दिखाता है कि देखो डैड, आपने दी हुई घड़ी टूट गई. तो इंद्रवदन रिएक्ट्स, हरामखोर. तो माया फट से रिएक्ट करती है, इंद्रवदन, मोनिशा अपनी बहू है. इंद्रवदन इज़ लाइक, अरे मैं तो शॉपकीपर को गाली दे रहा हूँ क्योंकि उसने क्लेम किया कि दिस घड़ी इज शॉक प्रूफ. तो मुझे उस वक्त वो माया का टाइमिंग और वो जो थॉट है, शी माइट हिट Monisha, but she knows she is our daughter-in-law, and there should be some level of decency when we talk about her. And I think यही एक चीज़ है जो बहुत सारे लोगों में और बहुत सारे घरों में लैक है, कम है. लोगों को पता नहीं how to talk decently. Whenever we are talking about someone who is not present here, how should we talk about that person? हमारी लैंग्वेज बहुत easily इट स्लाइड्स डाउन एंड डाउन एंड डाउन. अब मैं आपको इस शो के बारे में एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ विच किसी ने शायद ये नोटिस नहीं की होगी, एंड दैट इज़ दिस शो इज़ अ ग्रेट इंग्लिश ट्यूटर. यस, ये शो आपको इंग्लिश सिखा सकता है. हाउ? क्योंकि ये शो एक अपर क्लास फैमिली के ऊपर बेस्ड है. इसमें जो इंग्लिश वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स यूज़ किए हैं, दे कम अंडर अ स्टैंडर्ड इंग्लिश. एक होता है एक बेसिक इंग्लिश आती है, और फिर एक होता है थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल ऑफ इंग्लिश है, द स्टैंडर्ड वे ऑफ रिएक्टिंग है. तो वो वर्ड्स आप इस शो में सीख सकते हैं. अभी इस वीडियो के लिए मैंने 2-3 एपिसोड देखे, तो मेरे पास अभी शायद 20-25 ऐसे शब्द है, फ्रेजेस और इडियम्स है विच वी कैन यूज़ इन आवर डे टू डे लैंग्वेज, इन डे टू डे कम्युनिकेशन. इंग्लिश इज़ फॉरेन लैंग्वेज टू अस, इट्स नॉट आवर मदर टंग. और अगर आप मेरे तरह, आप भी अगर मतलब अपने वर्नैकुलर मीडियम से सीखे हुए, जैसे कि मैं मराठी मीडियम से पढ़ी हूँ, एंड तो हमें ना इंग्लिश आती है उतनी जितने एग्ज़ाम में लिखना है. टेक्निकल इंग्लिश, पूरा इंजीनियरिंग इंग्लिश में ही किया है, इंग्लिश में ही पेपर लिखे हैं. बट व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग आवर इमोशंस एंड ओपिनियंस, इट गेट्स वेरी हार्ड. So that's why I will recommend you to watch this show, how they express through the idioms and phrases and proverbs. It will definitely help you. I will just give you few examples. मैंने बस अभी 2-3 वीडियो देखे और मेरे पास लिस्ट है 25 ऐसे शब्दों की. आई नो देम बट आई डू नॉट यूज़ देम इन माई डे टू डे लाइफ. सो दिस शो इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज योर vocabulary also. I have decided now that I will watch this show again from the point of view of learning English only, and that will definitely help. I think Deven Bhojni and Atish Kapadia are writer and director, and hats off to them for this show. I hope you will enjoy this show as well as this video. So we will meet you very soon. Thank you so much. Bye.